Hello everyone, welcome to my YouTube channel Physics Wonder. The topic for today's video is heating effect of electric current. Let me first tell you there are three effects of electric current: heating effect of electric current, magnetic effect of electric current, and the chemical effect of electric current. This year in physics you will study the two effects of electric current, that is heating effect and magnetic effect. Heating effect you will study in this chapter only, and magnetic effect of electric current is your next chapter. Now heating effect of electric current. When an electric current is passed through a high resistance wire, like nichrome wire, the resistance wire becomes very hot and produces heat. This is called the heating effect of electric current. Means when we pass electric current through a high resistance wire like nichrome is a alloy. नाइक्रोम बेटा एक एलॉय होता है और एलॉय की जो रेजिस्टिविटी होती है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द प्योर मेटल्स. सो नाइक्रोम इज अ एलॉय हुज रेजिस्टिविटी इज हायर एज कम्पेयर टू द प्योर मेटल. सो इफ वी पास इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द नाइक्रोम वायर, then heat energy is produced in that wire, and which is known as heating effect of electric current. Means when electric current passes through the wire, so it will produces the heat energy, and this effect of current is known as heating effect of electric current. Now there is one law which is based on the heating effect of electric current, and the law is Joules Law of Heating. According to Joules Law of Heating, the heat energy produced in a wire is directly proportional to the three factors. जो heat energy produce होती है depends on the three factors. First is electric current के square of the electric current. Heat energy produced is directly proportional to the square of electric current. It means if we increases the current in a wire 2 times, then heat energy produced will be 4 times. Second factor is resistance of the wire. Heat energy produced is directly proportional to the resistance of a conductor. That's why for heating effect we use alloys, wires which is made up of alloy, because the resistivity or the resistance of alloys is more than the pure metal. And the third is time for which current is passed. That is, जितनी ज़्यादा टाइम के लिए करंट पास करेगा कंडक्टर में, more heat energy will be produced. So from this law it is clear that heat energy produced in a conductor depends on three factors, that is electric current, resistance, and the time for which current is flowing. So by combining all the three factors, here we will get H equals to I square RT. This is the formula for finding the heat energy produced in the conductor, and this law is known as Joules Law of Heating. Now there are many applications of heating effect of electric current. Here I have shown 4 examples. First is electric fuse, second is iron, third is electric bulb, and fourth is room heater. So we will discuss all the 3 applications one by one.
Now the first application of heating effect of electric current is electric bulb. In an electric bulb, when electric current is passed through the filament of a bulb, this is the filament of a bulb which is of tungsten. टंगस्टन की होती है फिलामेंट इसकी, और जिसका जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत हाई होता है. एंड एज वी नो फ्रॉम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड डिपेंड्स ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर. तो इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, दैट्स वाई हीट एनर्जी प्रोड्यूस विल बी हाई. एंड इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो भी बहुत हाई होता है, दैट इज 3380 डिग्री सेल्सियस. तो इसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है. तो उसका बेनिफिट ये है कि बहुत हाई टेम्परेचर पे भी द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब विल नॉट मेल्ट. Now the second application is electric fuse. As you can see in this figure, this is the fuse holder. ये fuse का एक figure है, fuse holder जो, and this is fuse grip जिसको हम होल्ड करते हैं जहाँ से. एंड these T1 and T2 आर द टर्मिनल्स जिससे फ्यूज़ वायर जो होता है वो कनेक्ट होता है. अभी जो फ्यूज़ वायर होता है इसका बेटा मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही लो होता है, जिससे कि अगर इलेक्ट्रिक सर्किट में थोड़ा सा भी ज़्यादा करंट फ्लो करेगा तो क्या होगा, इट विल मेल्ट. मेल्ट कैसे होगा, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू द सर्किट देन इट विल प्रोड्यूसेस हीट एनर्जी. और इसका मेल्टिंग पॉइंट इतना लो होता है कि अगर थोड़ी सी भी ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी तो it will melt, तो which will save the other electrical devices in our home. तो it is made up of materials having high resistance and low melting point. जो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ का वायर होता है वो उस जिस मटेरियल से बना होता है उसका रेजिस्टेंस बहुत ही हाई होता है एंड मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है. रेजिस्टेंस हाई इसलिए होता है, हाई रेजिस्टेंस विल प्रोड्यूस मोर हीट एनर्जी, एंड मेल्टिंग पॉइंट लो इसलिए होता है कि लो मेल्टिंग पॉइंट so that it can melt easily, which can break the electric circuit, due to which circuit breaks and current stops to flow to the circuit. अब बेटा ये जो फ्यूज़ होते हैं ये फ्यूज़ की पावर रेटिंग जो होती है वो डिफरेंट होती है. 1 एम्पियर के भी फ्यूज़ होते हैं, 2 एम्पियर के भी, 3 एम्पियर के भी, 5 एम्पियर एंड 10 एम्पियर. इट डिपेंड्स कि फ्यूज़ को हमें कहाँ यूज़ करना है. जो हाई पावर रेटिंग की जो डिवाइसेस होती हैं उनके लिए हाई रेटिंग का इलेक्ट्रिक फ्यूज़ यूज़ होता है, और जो लो पावर रेटिंग की डिवाइसेस होती हैं उनके लिए लो रेटिंग का इलेक्ट्रिक फ्यूज़ यूज़ होता है. नाउ द लास्ट इज इलेक्ट्रिक आयरन एंड हीटर. इलेक्ट्रिक आयरन और इलेक्ट्रिक हीटर में बेटा जो होती है कॉइल होती है, एंड दैट कॉइल इज मेड अप ऑफ एलॉय.
Why alloy is used in the coil? Because alloy have higher resistance than the pure metals, and from Joules law of heating effect, heat energy produces directly proportional to the resistance of the conductor. तो alloys का resistance ज़्यादा होता है तो heat energy भी इसमें ज़्यादा produce होगा, और ये heating devices हैं, इनमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा heat energy produce करनी है, इसलिए जो इनकी coils होती हैं वो alloys की बनी होती हैं, and when electric current passes through these coils then it will produces heat energy which we can use further. So coils of electric toasters and electric irons made up of an alloy rather than pure metal, because resistivity of alloy is higher than pure metals. Also at high temperature the alloys do not melt easily. हाँ, और एक रीज़न और है alloys को यूज़ करने का, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे भी वो alloys जो होते हैं वो जल्दी मेल्ट नहीं होते हैं. So I think it is clear to everyone. Thank you.